linking Google Ad Analytics with Google Ads. Why link GA with Google Ads? इसके अंदर लिखो आप linking GA with Google Ads helps you track how well your ads are performing. So you can see how many people click on your ads and then completed course. Example, purchase, sign ups on your site. तो इसमें क्या लिख रहा है, लिंकिंग दिए हुए गूगल एड्स क्या करेगा, हेल्प करेगा कि कैसे आप ट्रैक कर सकते हो एड्स कैसे आपकी परफॉर्म कर रही है, वो चीज आपको समझ में आती रहेगी आपको। तो इसके अंदर स्टेप देख लेते हैं लिंक कैसे करते हैं। स्टेप वाइज स्टेप देखो। फर्स्ट, गो टू योर गूगल एड्स अकाउंट and click on Tools and Settings. Second point, under Setup, check linked accounts and choose Google Analytics. Select the Analytics property you want to link and click Link. अब Analytics property से आप समझ लो क्या है प्रॉपर्टी। एनालिटिक्स प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, अब कई बार क्या होता है, अब इन्होंने चूज एनालिटिक प्रॉपर्टी। इससे मतलब ये है कि जैसे आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आप कोई ना कोई एक वेबसाइट चूज करोगे, तो आप जैसे कि abc.com हो गया, shiom.com हो गया, है ना, आपकी दूसरी वेबसाइट उसका .com हो गया, 3 वेबसाइट्स हो गई। तो कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करके उसका फिर एनालिटिक्स देख सकते हो, वहाँ पे उसको क्लिक करके लगा दोगे इस वेबसाइट पे मेरी एड कर रही थी एड्स, ठीक है, वहाँ लगा दोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, now you can see the full customer journey from clicking your ad to building your site and completing a goal. अब एक तरीके से आपको सब कुछ नजर आ जाएगा जो एड्स के चल रहा है। तो वहां पे जो सब कुछ नजर आए तो आपके हर चीज इजीली हो जाएगी, आपको बार बार एक लाइन रखनी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट की, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आज हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है।